मैं विकास स्वर्णकार सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 28 minutes to go for the launch and the countdown is progressing. इसरो के एक और नए मिशन में आज का यह मिशन PSLV-C53 एक समर्पित वाणिज्यिक यह प्रमोचन यान पिछला मिशन PSLV-C52 संरूपण वाला प्रमोचन यान है के सफल प्रक्षेपण के प्रथम चरण में ठोस नोदक वाला फिर से तैयार है S139 अपने एक नए मिशन मोटर लगा हुआ है। द्वितीय चरण में तरल नोदक वाला मोटर है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चरण में हम आपको समय समय पर मिशन के विवरण तथा अन्य जानकारियां तरल नोदक वाला इंजन लगा हुआ है। इस यान में 3 उपग्रह हैं जो अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर सफर करेंगे। इनमें पहला है DSEO उपग्रह जो कि 365 kg का लघु उपग्रह है। द्वितीय उपग्रह न्यूसार नामक 155 kg का लघु उपग्रह है। तीसरा उपग्रह इसमें स्कूप 1 नामक 2.8 kg का नैनो उपग्रह है। is a commercial mission to launch DSEO satellite weighing 365 kg मुख्य उपग्रह DSEO 6948.7 किलोमीटर के अर्धदिग्भागांश में 10 डिग्री के झुकाव के साथ इलेप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसकी भूमध्य रेखा से ऊंचाई 570 किलोमीटर की होगी। Being launched today is a core-alone version of reliable and versatile here in Sriharikota. Clear sky launch is very special for the several reasons that we will narrate ahead. Today's launch marks the second launch mission by ISRO for the year 2022 and also the second time ever NSIL has undertaken a commercial mission. The viewers may recall that in 2021 NSIL achieved its first commercial mission with the launch of PSLV-C51 Amazonia 1. PSLV-C53 का प्रमोचन किया जाएगा। This also marks some more milestones like the 81st launch vehicle mission from SDSC Shar, 55th flight of the workhorse PSLV and the 15th for the core-alone variant of the launch vehicle. अंतिम गतिविधियों तथा परीक्षणों के पश्चात प्रमोचन यान को प्रज्वलन के लिए सक्षम कर दिया जाएगा। of GSAT-24 communication satellite operating in KU band on board Ariane 5 from the Guru on 22nd June 2022. 28 minutes to go for the launch and the countdown is progressing. As we wait for the launch, we will bring to you the glimpses of integration activities of PSLV-C53 at the second launch pad. जिसमें प्रथम चरण में ठोस नोदक वाला S139 The campaign begins with the flagging off of nozzle end segment with co-base shroud by Director SDSC Shar. ठोस नोदक है तथा अंत The segment is being transported to the vehicle assembly building इंजन लगा हुआ है where it is being handled carefully and precisely placed on the mobile launch pedestal. जो अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर सफर करेंगे। PS1 or the first stage comprises of 5 segments, 365 kg का लघु उपग्रह है। 3 similar middle segments topped न्यूसार by नामक 155 kg का लघु उपग्रह है। तीसरा उपग्रह इसमें स्कूप 1 नामक 2.8 kg का नैनो उपग्रह है। इन्हें इसी क्रम में इनके उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपित किया जाएगा। मुख्य उपग्रह DSEO को 6948.137 किलोमीटर के अर्धदिग्भागांश में 10 डिग्री के झुकाव के साथ इलेप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसकी भूमध्य रेखा से ऊंचाई 570 किलोमीटर की होगी। That is the head-in segment. Weather is fine here in 300 segment joined for the S139 for the launch. A momentous occasion indeed. Today's launch marks the second launch mission by ISRO for the year 2022 and also the second time ever NSIL has undertaken a commercial mission. The viewers may recall that in 2021, NSIL achieved its first commercial mission with the launch of PSLV-C51 Amazonia 1 or the PS2, being brought to the vehicle assembly building some more milestones like the 81st launch vehicle mission from SDSC Shar, 55th flight of the workhorse PSLV and the 15th for the core-alone variant of the launch vehicle. परीक्षित कर लॉन्च पैड लाया जाता है। The recent most mission by ISRO was the launch of GSAT-24 communication satellite
operating in KU band on इसे board फ्लैग ऑफ किया जा रहा Ariane है 5 from लॉन्च the पैड के लिए। Kuru on 22nd June 2022. इसे प्रथम व्हीकल असेंबली बिल्डिंग पर लाया गया जहां द्वितीय चरण तक समायोजन पूर्ण हो चुका था। इसके As we ऊपर wait for the तृतीय launch, चरण we will bring to तथा you चतुर्थ the चरण glimpses of समायोजित कर दिए गए integration हैं activities of और यह है PSLV-C53 at the second DSEO launch pad. Roger. The campaign begins with the flagging off of nozzle end Minus segment 23 with minutes. core base shroud कर by Director SDSC लॉन्च पैड Shah. लाया जाएगा The segment is being transported to the और अभी vehicle आप देख पा assembly रहे हैं building, इसे where it is डुअल being लॉन्च handled अडेप्टर के carefully ऊपर and precisely समायोजित कर दिया गया placed है। on the mobile launch pedestal. PS1 or the पूर्ण first परीक्षित stage होकर यह भी comprises आया of 5 और अब इसे segments. The nozzle end segment, PSLV-C53 3 similar में middle समायोजित कर segments दिया गया। topped by head end अब आप देख segment. पा रहे हैं ऊष्मा कवच के अंदर इन्हें सुरक्षित कर दिया गया है। The visuals of the Minus middle 25 segment. minutes. VAB में यह पूर्ण समायोजित PSLV-C53 इसे फ्लैग ऑफ कर दिया गया है और अब यह Roger. These SLP-UT की segments तरफ are processed and बढ़ रहा है। prepared in special facilities at the spaceport with utmost regard to quality and safety. पूर्ण समायोजित तथा परीक्षित होकर PSLV-C53 सुसज्ज है SLP-UT में। Roger. Minus 22 minutes. That is the head end segment. 300 segment joint for the S139 of the mission control center. A momentous occasion indeed. Experts keeping an assembly of close eye on the health parameters of launch vehicle and the satellites. The second launch pad has so far hosted 29 launches. Today's launch will be the 30th in all and 16th for PSLV. Request all stations change over to channel 2 at T minus 20 minutes. No confirmation The second is needed stage to अब हम control. प्रमोशन से PS2 करीबन 21 मिनट being की दूरी brought to पर the vehicle assembly building, tilted and integrated. Roger. आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तृतीय चरण की उल्टी गिनती 24 घंटे पहले शुरू हो चुकी है। किया जा रहा है। इस दौरान गतिविधियां जैसे यान को पावर ऑन करना, लॉन्च पैड सभी तंत्रों तथा नियंत्रण प्रणालियों की स्वास्थ्य जांच करना, तरल नोदक का भराव की स्थिति प्राप्त करना Minus तथा 21 उनका minutes. भराव शुरू करना। अब इसे फ्लैग ऑफ उपग्रह को पावर ऑन करना, बैटरी आवेशन, ऐसी सभी गतिविधियां संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा चुकी हैं। इसे प्रथम व्हीकल असेंबली बिल्डिंग पर लाया गया जहां सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, इसलिए पूर्ण हो चुका इन्हें सुनियोजित तरीके से पूर्ण किया जाता है। तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण समायोजित कर दिए गए हैं और यह है DSEO। सभी वैज्ञानिक अभियंता अपने अपने चरण की जानकारी सुदूर बैठे स्थल पर मिशन नियंत्रण कक्ष पर देख पाते हैं। Minus इसे भी 23 पूर्ण minutes. परीक्षित कर लॉन्च पैड लाया जाएगा Roger. और अभी आप देख पा रहे हैं इसे डुअल लॉन्च अडेप्टर के ऊपर समायोजित कर दिया गया है। पूर्ण परीक्षित होकर यह भी VAB आया और अब इसे PSLV-C53 The countdown time में for this समायोजित कर particular दिया गया। mission has been 26 hours अब आप long. देख पा रहे हैं Commenced at ऊष्मा 4 कवच p.m. के अंदर yesterday, इन्हें सुरक्षित during कर which दिया गया है। the launch vehicle and the satellite systems have been checked. VAB Onboard में batteries यह were पूर्ण charged and समायोजित liquid propellants, PSLV-C53 owing to flag their off कर दिया गया है toxicity, और were अब यह serviced with utmost regard to SLP-UT safety. की तरफ बढ़ रहा है। Meanwhile, the tracking systems gear up, verifying their coherence, and the meteorology instruments keep a constant visual on the weather. परीक्षित होकर PSLV-C53 सुसज्ज है SLP-UT में। मौसम पूरी तरह अनुकूल प्रक्षेपण के लिए। Minus 22 minutes. वायु गति 5 मीटर प्रति सेकंड से कम है। आसमान खुला हुआ, नीला आकाश। Visuals of the mission control center. Experts keeping a close eye on the health parameters of launch vehicle and the satellites. The second अब launch कुछ pad क्षणों में has so far hosted सभी 29 निदेशक launches. अपने Today's अपना launch will be अनुमोदन the 30th मिशन निदेशक को in देंगे। all and 16th for PSLV. Request all stations change over to channel 2 at T minus 20 minutes. No ROD Roger. confirmation is needed to अब हम control. प्रमोशन से करीबन 21 मिनट की दूरी पर COA to ROD, all range instrumentation systems are ready for PSLV-C53
प्रमोशन की उल्टी गिनती 26 घंटे पहले शुरू हो चुकी है। इस दौरान गतिविधियां जैसे यान को पावर ऑन करना, सभी तंत्रों तथा नियंत्रण प्रणालियों की स्वास्थ्य जांच करना, तरल नोजल का भराव की स्थिति प्राप्त करना तथा उनका भराव शुरू करना, उपग्रह को पावर ऑन करना, बैटरी आवेशन, ऐसी सभी गतिविधियां संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा चुकी हैं। सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, इसलिए इन्हें सुनियोजित तरीके से पूर्ण किया जाता है। -18 minutes. सभी वैज्ञानिक अभियंता अपने अपने चरण की जानकारी सुदूर बैठे स्थल पर मिशन नियंत्रण कक्ष पर देख पाते हैं। मिशन डायरेक्टर रोजर। Roger. अभी अभी आपने सुना The countdown time for this particular mission has been 26 hours long. Commenced at 4 p.m. yesterday, during which the launch vehicle and the satellite systems have been checked. On-board batteries were charged and liquid propellants, owing to this toxicity, were serviced with utmost regard to safety. क्षणों में मिशन निदेशक इस लॉन्च को Meanwhile, the tracking systems gear up, verifying their coherence, and the meteorology instruments keep a constant visual on the weather. LCC2, VLCC2, please मौसम note, पूरी तरह timing अनुकूल confirmed, प्रक्षेपण के लिए वायु गति 5 मीटर प्रति सेकंड से कम है। Range is ready for PSLV-C53. आसमान खुला हुआ, नीला आकाश। अब कुछ ही क्षणों में सभी निदेशक अपने अपना अनुमोदन मिशन निदेशक को देंगे। All tracking systems are ready for PSLV-C53 DSEO mission launch. ROD Roger. PS4 to BTC, PS4 stage ready for PSLV-C53 DSU mission. COA to ROD. All range instrumentation systems are ready for minutes. PSLV-C53 अभी हम देख रहे हैं मिशन निदेशक ने चाबी घुमाकर ROD Roger. इसे अनुमोदित किया। have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV-C53 DSEO mission. All ROD Roger. the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from ROD launch Roger. vehicle, spacecraft, range and extract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV-C53 DSEO mission at -18:02 hours IST today, that is 30th of June 2022. The system parameters of PSLV. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch. The launch vehicle is ready for based on authorization from Mission Director. Vehicle Director hereby Director authorizes Roger. to initiate the automatic launch sequence for the launch of PSLV-C53 DSEO mission at 18:02 hours IST today, 30th June. automatic launch sequence initiated for PSLV-C53 launch. SDS servers activated. MC confirms अभी reception of आपने SHAR-1 and सुना। SHAR-2 data. उपग्रह निदेशक, टेलीमेट्री ट्रैकिंग निदेशक के प्राधिकार के पश्चात रेंज सेफ्टी निदेशक ने ऑटोमेटिक लॉन्च निदेशक शुरू करने का आदेश दिया और अब ऑटोमेटिक तैयारियों की जानकारी मिशन निदेशक को दे चुके हैं। अभियान पूरी तरह कुछ क्षणों में कंप्यूटर के नियंत्रण पर है। इस लॉन्च को इस दौरान ऑनबोर्ड कंप्यूटर पूरी गतिविधियों पर मुद्रित परीक्षण अनुक्रम चलाएगा और समय समय पर खुद ही प्रज्वलन का कमांड भी जारी कर देगा। LCC2, VLCC2, please note, अब यान पूरी timing तरह confirmed, स्वचालित हो external चुका है। You have just watched Sri S.R. Biju, Project Director for PSLV and Mission Director for PSLV-C53 DSEO mission, giving the clearance and authorizing the launch. And you've also seen a Vehicle Director announcing the start of automatic launch sequence. From about 14 minutes 30 seconds to the launch,
Further activities leading to the launch will be in the autonomous mode by the automatic launch sequence. The major checkout parameters of the launch vehicle and satellite will be taken care by the onboard computers. Minus 16 minutes. This is mission अभी आप director. देख रहे हैं मिशन निदेशक ने चाबी घुमाकर इसे अनुमोदित किया. Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV-C53 DSEO mission. PSLV-C53 की उड़ान पूर्वी दिशा की ओर होने वाली है Have been completed और इसमें शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने, ब्याग स्थित ग्राउंड ट्रैकिंग स्टेशंस की मदद से हम यान को ट्रैक करने वाले हैं. for actuation in progress. Prevailing favorable weather conditions. Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV-C53 DSEO mission at 18:02 hours IST today, that is 30th of June 2022. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch. Based on the authorization from Mission Director, Vehicle Director hereby authorizes to आप देख रहे initiate हैं automatic launch sequence for the गैलरी launch of PSLV दर्शक दीर्घा से भरी हुई है. at सभी इस पल का रोमांच लेने यहाँ उपस्थित हैं. 30th June. Automatic launch sequence आप देख पा रहे हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ. confirms reception of SHAR-1 and SHAR-2 data. मिशन निदेशक के Let me प्राधिकार के take this पश्चात opportunity to also tell the viewers that SDSE SHAR ऑटोमेटिक has लॉन्च resumed to सीक्वेंस welcome शुरू the करने का आदेश दिया enthusiasts to witness the और launch अब from ऑटोमेटिक its लॉन्च launch view सीक्वेंस शुरू हो gallery. चुका है. अब यान पूरी तरह ऑनबोर्ड कंप्यूटर के नियंत्रण पर है. इस दौरान ऑनबोर्ड कंप्यूटर पूरी गतिविधियों पर आंतरिक परीक्षण अनुक्रम चलाएगा और समय समय We are पर about 11 minutes ही 30 seconds to the launch. प्रज्वलन का कमांड भी जारी कर देगा. अब यान पूरी तरह स्वचालित हो चुका है. You have just watched -14 Sri S.R. Biju, Project Director for PSLV and Mission Director for PSLV-C53 DSEO mission giving the clearance and इस authorizing बीच the आपको launch. न्यू You've also स्पेस seen इंडिया a लिमिटेड के vehicle बारे में कुछ director जानकारी announcing the देते हैं. start of न्यू automatic स्पेस इंडिया launch लिमिटेड sequence. 6 मार्च 2019 From को about गठित 14 पूर्णतः minutes भारत 30 सरकार seconds की to the कंपनी है launch. जो Further अंतरिक्ष activities विभाग leading to के the अधीन launch है. will be in the autonomous NSIL mode की प्राथमिक by the उद्देश्य automatic भारतीय launch उद्योगों को sequence. उच्च अंतरिक्ष The major प्रौद्योगिकी के checkout लिए सक्षम parameters बनाना of है the launch vehicle तथा and भारतीय satellite अंतरिक्ष उत्पाद will be और taken सेवाओं care को by the समर्थन onboard कर computers. उनका व्यावसायिक उपयोग करना है. यह मिशन NSIL का दूसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन है. इससे पहले PSLV-C51 अमेजोनिया 1 नामक मिशन पे इनका पहला वाणिज्यिक मिशन था. Let me explain about the launch vehicle configuration. Actuation in progress. The PSLV-C53 is core-alone version PSLV-C53 की with उड़ान पूर्वी alternate दिशा की ओर solid होने and वाली है liquid stages. और इसमें शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने, ब्याग 139 ग्राउंड tons of ट्रैकिंग solid स्टेशंस की मदद propellant से as हम the यान main को ट्रैक booster करने called वाले the हैं. PS1. It consists of 5 segments approximately Minus 30 10 tons minutes. each. Core dia 2.8 meters, thrust 4,800 kilonewtons, action time of 108 seconds. The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system with 41 tons propellant loading of UH-25 as fuel and N2O4 as All oxidizer. actuations The completed. Vikas engine develops 799 kilonewtons thrust. आप The देख रहे third हैं stage of the rocket is Gallery called HPS-3. दर्शक दीर्घा Its से height भरी is हुई है. 3.6 meters, सभी इस पल का diameter 2 रोमांच meters, लेने यहाँ and उपस्थित हैं. uses 7.65 tons of propellant. आप देख पा रहे The हैं fourth stage सेक्रेटरी is the डिपार्टमेंट ऑफ liquid स्पेस और stage, चेयरमैन which is इसरो श्री 2.5 एस meters सोमनाथ. in height, 1.34 meters in diameter, and 1.6 tons of propellant loading. Let me take this opportunity to also tell the viewers that SDSE SHAR has resumed to welcome the equipment bay is on the top of the fourth stage from its launch view gallery ensconced inside the payload fairing of 3.2 meters diameter. The overall height of PSLV is 44.4 meters and gross lift-off weight of PSLV
core alone version for the present mission. We are about 11 minutes 30 seconds to the launch. अब हम उड़ान से 8 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर सभी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इन्हें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पर 6 मार्च 2019 को सक्षम करेगा। भारत सरकार की कंपनी है जो अंतरिक्ष विभाग के अधीन है। NSIL की प्राथमिक उद्देश्य भारतीय उद्योगों ध्रुवीय उपग्रह प्रौद्योगिकी के लिए सक्षम बनाना है। इसके 4 प्रकार भारतीय अंतरिक्ष का प्रयोग और सेवाओं में किया जाता है। समर्थन कर उनका व्यावसायिक उपयोग करना है। यह मिशन NSIL का दूसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन है। इससे पहले PSLV-C51 अमेजोनिया 1 अनुसार निश्चित किया जाता है कि कौन सा संरूपण वाणिज्यिक मिशन था इसमें उपयुक्त होगा। इन संरूपणों में एक्सेल संरूपण का 1675 केजी के नेतृत्व को 600 किलोमीटर के ध्रुवीय कक्षा में पहुंचाने की क्षमता होती है। उसी तरह QL संरूपण में 1525 केजी के नेतृत्व को ले जाने की तथा DL संरूपण में 1260 केजी तथा CA जो कि वर्तमान प्रमोचकयान है कोरलोन इसकी 1020 केजी के नेतृत्व को 600 किलोमीटर तक ले जाने की क्षमता होती है। 4800 kilonewtons. Action time वर्तमान में of 108 पूरे seconds. उपग्रहों को मिलाकर The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system with 41 tons propellant loading of UH-25 as fuel and N2O4 as तथा ये oxidizer. 15वां प्रमोचन इस Vikas संरूपण में है। engine develops 799 kilonewtons thrust. The third stage of the rocket अब हम is 6 called मिनट 45 HPS-3. सेकंड Its प्रमोचन से height दूर is 3.6 meters, diameter 2 meters and uses 7.65 tons. Speaking about the flight sequence which will be followed today, the fourth stage, the reaction control thrusters are fired 2.85 meters in height, 1.34 at liftoff that is diameter T0 and 1.6 tons for the propellant stage will be ignited. Monomethyl hydrazine stage is burning and mixed oxides of nitrogen as the alleged rocket will be fired. The equipment necessary is on top of the second stage. The satellites are ensconced during the first stage. 3. The launch vehicle would have reached 51 kilometers overall height of PSLV and would have gained a velocity meters to 1.4 kilometers per second related to Earth. Core alone version for the present mission is 200 time. The PS1 will separate and the PS2 is ignited 200 milliseconds later. Crossing the dense atmosphere marks 2 flight अब हम events, उड़ान से the 8 मिनट jettisoning 30 of सेकंड the की दूरी heat पर shield and the initiation of closed loop guidance. Flight The position total loading burn started. time of PS2 is 150 seconds and it is then सभी separated गतिविधियां from the सुचारू रूप से ongoing जारी launch हैं। vehicle. ऑनबोर्ड कंप्यूटर Then the third इन्हें stage called the पूरा होने HPS-3 पर stage is ignited. लॉन्च को Following सक्षम a करेगा। 126 seconds burn time, the PS-3 is burnt out but continues to coast along with PSLV the एक ongoing launch vehicle. ध्रुवीय उपग्रह The प्रमोचकयान stage है। separates another इसके 200 4 seconds प्रकार के later. संरूपणों का प्रयोग इसरो The में किया जाता PS4 है। or the fourth stage इसके नाम है is ignited XL, 300 seconds QL, later from the DL separation तथा of CA। PS3. The burn time of PS4 यह -5 विभाग 133 तथा seconds. कक्षा के अनुसार निश्चित During किया the जाता burn है कि regime कौन सा of संरूपण PSLV's fourth stage, the इसमें orbital उपयुक्त parameters होगा। for the injection of the prime इन satellite संरूपणों में DSEO एक्सेल are संरूपण achieved. Thereafter, the dual launch 1675 adapter केजी will के be separated, नेतृत्व को 600 followed by the किलोमीटर के injection ध्रुवीय of कक्षा में co-passenger पहुंचाने की क्षमता satellites होती है। NewSAR and उसी तरह Scoop 1 QL into the संरूपण orbit. में PS4 1525 thereafter केजी will continue to के stay in नेतृत्व orbit को ले as जाने a की तथा stabilized platform DL for संरूपण में experiments. 1260 केजी तथा CA जो कि वर्तमान प्रमोचकयान है कोरलोन इसकी 1020 केजी के We are नेतृत्व 4.5 को minutes 600 away किलोमीटर from the तक ले launch जाने की time. क्षमता होती है। Countdown progressing smoothly. वर्तमान में On your screens पूरे now, उपग्रहों को मिलाकर Chairman कुल ISRO and Secretary DOS 523 Shri केजी S. के Somnath. नेतृत्व 7 हैं। minutes. सीए संरूपण में इससे पहले 14 सफल प्रमोचन हो चुके हैं तथा ये 15वां प्रमोचन इस संरूपण में है। -4 minutes. अब हम 6 मिनट 45 सेकंड प्रमोचन से दूर।
Speaking about the flight sequence which will be followed today, the reaction control thrusters are fired 2.8 seconds before launch. At liftoff, that is at T0, the core stage or the first stage will be ignited. While the first stage is burning with tail-off thrust, the alleged rocket will be fired to give the necessary inertia to the second stage for ignition. During the regime of first stage, the launch vehicle would have reached 51 kilometers altitude and would have gained a velocity close to 1.4 kilometers per second relative to Earth. 108 seconds flight elapsed time, the PS1 will separate and the PS2 is ignited 200 milliseconds later. Crossing the dense atmosphere marks two flight events, the jettisoning of the heat shield and the initiation of closed-loop guidance. Total burn time of PS2 is 150 seconds and it is then separated from the ongoing launch vehicle. Then the third stage called the HPS3 stage is ignited. Following 126 seconds burn time, the PS3 is burnt out but continues to coast along with the ongoing launch vehicle. The stage separates another 200 seconds later. The PS4 or the fourth stage is ignited 300 seconds later from the separation of PS3. The burn time of PS4 is 133 seconds. During the burn regime of PSLV's fourth stage, the orbital parameters for the injection of the prime satellite DSEO are achieved. Thereafter, the dual launch adapter will be separated, followed by the injection of co-passenger satellites, NewSAR and Scoop-1 into the orbit. PS4 thereafter will continue to stay in orbit as a stabilized platform for experiments. और इन्हें इन स्पेस और NSIL के माध्यम से शामिल किया गया है. We are 4.5 minutes away from the launch time. अब हम प्रमोशन से 1 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर. On your screens now, Chairman ISRO and Secretary DOS, Shri S. Somnath. सभी गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं. दर्शकों के लिए बहुत ही रोमांच का पल होता है. न सिर्फ दर्शकों के लिए, यहाँ उपस्थित वैज्ञानिक जिन्होंने दिन रात एक कर प्रमोशन यान तैयार किया है तथा उपग्रह तैयार किए हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही रोमांच का समय होता है. -1 minute. -55 seconds. All subs on. -50 seconds. इसरो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमेशा कुछ न कुछ नवीन होता रहता है. इसरो इसमें सदैव तत्पर रहते हैं और नए नए अनुसंधान तथा परीक्षण करते रहते हैं. वैसा एक नवीन उपाय के तहत अपना उद्देश्य पूर्ण किए हुए PS4 चतुर्थ चरण PSLV के उनको पुनः त्रिअक्षीय स्थिर माइक्रोग्रेविटी के प्रयोग में लाया जाएगा. इन प्रयोगों का उद्देश्य -20 seconds. छोटे वैज्ञानिक निर्धारों को 4 से 6 महीनों के लिए कक्षीय प्रयोगों को पूरा करना होता है. PS4 प्लेटफॉर्म में इसकी विशेषता इस संदर्भ में यह है कि इस चरण में मानक इंटरफेस, पावर उत्पादन, टेलीमेट्री, टेलीकमांड, स्थिरता, अक्ष में सुनियोजित परिचालन तथा रखरखाव की पूरी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं. इस बार PSLV-C53 में प्रमोशन यान में भी यह चतुर्थ चरण में उपयोग किया जाएगा. PSLV-C53 प्रयोगों में पहली बार किया जा रहा है. सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा जब PS4 स्टेज एक गर्जना करता हुआ PSLV-C53 परिक्रमा करेगा. आकाश में आप देख सकते हैं कितना साफ नजारा है. किया जाएगा बहुत ही रोमांच भरा नजारा. NGC तंत्र जिसे नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल कहा जाता है, इसके उपयोग से अभिवृत्ति स्थिरीकरण प्राप्त किया जाएगा. PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहा जाता है, शॉर्ट में POEM. इस बार PSLV-C53 चरण का निष्पादन सामान्य भारों का वहन करेगा, जिसमें 2 भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप मेजर्स तथा मेजर्स ध्रुव एरोस्पेस बढ़ता हुआ PSLV-C53 स्पेस और NSIL के माध्यम से शामिल किया गया है. Developed during the firing of first stage is 4,800 kilonewtons.
अब हम प्रमोचन से 1 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर। यह चरण प्रथम चरण है जो कि 8.2 सेकंड तक चलेगा। सभी गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। दर्शकों के लिए बहुत ही रोमांच का पल होता है। इस चरण में 4846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और वह प्रमोचन यान को 50 किलोमीटर की दूरी प्रदान करता है। प्रमोचन यान तैयार किया है तथा उपग्रह तैयार किए हैं। उनके लिए भी यह बहुत ही रोमांच का समय होता है। kilometers at 51 kilometers. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. Minus 50 seconds, 2 minutes. प्रथम चरण पृथक कर दिया गया है यान से 45 seconds. तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Minus 40 seconds. Second stage performance normal. You can see the flight events on your Minus TV screen. 35 seconds. The recent one has been the initiation Minus of closed 30 loop seconds. guidance and PS2 currently operating. Minus 25 seconds. जी हाँ, It is 2.5 minutes from the launch. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. द्वितीय चरण 10, 9, 150 सेकंड का होगा। 7, 6, Second इस stage दौरान performance यह 800 किलो normal. न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 1, 174 किलोमीटर 0, की ऊंचाई प्रदान करेगा। plus 1, plus 5 seconds. Top इस चरण normal. के दौरान दो मुख्य घटनाएं हो रही हैं। Payload bearing separated. PSLV-C53 अभी अभी आपने देखा मिशन सफलतापूर्वक कवच पृथक हो चुका है यान से। गर्जना का यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। आकाश में इसका अर्थ है अब जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर की मदद से अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है। बहुत ही रोमांच भरा नजारा। घने वातावरण से बाहर जाने की वजह से Second stage performance ऊष्मा The की normal. जरूरत is नहीं lift है। off and the इसलिए उसे PS1 पृथक कर performance दिया is गया है। according to the expectations for this mission. Shar and Port Blair stations currently First tracking stage the performance launch vehicle normal. trajectory. प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य। Sharwan is in The main second auto. stage of PSLV increases the velocity of Shar ongoing is in launch main auto. vehicle from Second 1.2 stage kilometers कक्षा की ओर per बढ़ता second हुआ to 4 PSLV kilometers per C53 second. Thrust developed during the firing of first stage is 4,800 kilonewtons. द्वितीय चरण का प्रदर्शन सामान्य। R2 अब tracking कुछ ही SCVT सेकंड्स 1. में यह चरण पृथक किया प्रथम जाएगा चरण है यान जो से First stage performance normal. 8.2 सेकंड तक चलेगा। उसके तुरंत बाद ही तृतीय चरण का Second प्रज्वलन stage शुरू होगा। separated. Third इस stage दौरान ignited. इस चरण में 4846 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है The और second वह stage has प्रमोचन been यान को 50 separated किलोमीटर की and दूरी the third प्रदान stage करता called है। the PS3 has begun Third is stage 1 minute performance 45 normal. seconds from launch. It is a And solid the altitude propellant attained based is motor. 49 kilometers. It increases the relative velocity from 51 0 to Stage 7.2 separated. kilometers Second per stage second for the engine mission started. Closed loop requirements. guidance Thrust developed initiated. is 240 kilonewtons. Plus 2 minutes. प्रथम चरण पृथक कर दिया गया है यान से तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। PS3 का प्रज्वलन काल Second 125 stage सेकंड का होगा। performance normal. You can see इस the दौरान flight यह events on your TV 335 किलो screens. न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। The recent one has been the initiation of closed loop guidance and PS2 Third currently stage operating. performance normal. जी It is- हाँ, It is द्वितीय 2.5 minutes from the launch. तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। द्वितीय चरण तृतीय चरण के 150 सेकंड की गति 7.259। Second इस stage दौरान performance यह 800 normal. किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 174 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा। Third stage performance normal. इस चरण के दौरान दो मुख्य घटनाएं हो रही हैं। Payload bearing separated. अभी अभी आपने देखा The total burn ऊष्मा time कवच for पृथक हो चुका HPS3 है is 132 यान seconds. से Plus 6 minutes. तथा यान क्लोज During लूप this- गाइडेंस के in this अंतर्गत duration, है। it will add 60 इसका kilometers अर्थ to है the altitude. अब जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर की मदद से अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है।
घने वातावरण से बाहर जाने की वजह से Second stage अब performance ऊष्माकवच की normal. जरूरत नहीं है, इसलिए उसे पृथक कर दिया गया है। अब कुछ ही क्षणों में PS3 stations currently tracking the launch vehicle trajectory. जी हाँ, प्रज्वलन समाप्त हो चुका है HPS3 The का। second stage of PSLV increases in the velocity combined of hosting ongoing phase. launch vehicle from Second 1.4 stage kilometers per performance यह second कंबाइंड to 4 कोस्टिंग फेज kilometers पर per है, second. जिसे हम PS3 PS4 कोस्टिंग फेज कहते हैं। यह फेज 200 सेकंड तक Plus चलेगा। 4 minutes. द्वितीय चरण का प्रदर्शन सामान्य, तत्पश्चात PS3 को पृथक कर दिया जाएगा। अब कुछ ही सेकंड्स में यह बंद हो Plus पृथक 7 किया minutes. जाएगा यान से। अब हम 420 Vehicle सेकंड की दूरी performance पर आ is चुके हैं। normal. उसके तुरंत बाद ही तृतीय चरण का Second प्रज्वलन stage शुरू होगा। separated. Third stage ignited. सापेक्ष गति 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई है The second stage has been 270 separated किलोमीटर। and the third stage called the PS3 has begun Third its stage operation. performance normal. Now though the third solid stage propellant has completed its motor. action, it continues to coast along with the fourth It stage. increases the and relative spacecraft. velocity from 4 to 7.2 kilometers It will per do so second for for the the next mission 200 requirements. seconds. Thrust During developed which time time there is 140 129 kilometers gain in the altitude. The coast phase exists while the rocket is 1000 PS3 का to प्रज्वलन काल 2370 125 kilometers सेकंड का होगा। downrange from the launch port. Vehicle इस दौरान performance यह normal. 335 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न Port करेगा। Blair and Brunei stations tracking presently. Plus 8 minutes. Third stage performance normal. यान के सभी तंत्र सामान्य काम करते हुए तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य दिशा को पूरी तरह अनुसरण करता हुआ तृतीय चरण के अंत तक यान की गति 7.259 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। Third stage performance normal. Vehicle performance normal. The total burn time for HPS-3 is thrust being 132 developed presently, seconds. but the launch Plus 6 vehicle minutes. continues to be controlled. In this duration, it will add 60 kilometers to the altitude. जी हाँ, इस दौरान Plus 9 minutes. हमारे ग्राउंड स्टेशंस जैसे शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने बैक ग्राउंड स्टेशंस में से वर्तमान में ब्रूने तथा ब्याक ग्राउंड स्टेशन यान के आंकड़े हम तक पहुंचा रहे हैं। अब कुछ ही क्षणों में PS3 Third stage बर्नआउट हो action जाएगा। completed. जी हाँ, प्रज्वलन समाप्त हो चुका है। हम देखेंगे PS3 का PS3 स्टेज का Vehicle पृथकीकरण। in combined hosting phase. अब यह कंबाइंड कोस्टिंग फेज पर है, जिसे हम PS3 PS4 कोस्टिंग फेज कहते हैं। यह फेज 200 सेकंड तक चलेगा। तत्पश्चात PS3 को Third पृथक stage कर दिया जाएगा। separated. Plus 7 minutes. अब हम 420 There is a सेकंड की दूरी पर आ confirmation चुके from the हैं। range operations director that the third stage has been separated, Vehicle performance normal. the fourth stage and spacecraft are सापेक्ष following गति their 7.2 intended किलोमीटर trajectory प्रति very सेकंड closely. तथा ऊंचाई है 270 PS4 किलोमीटर। is yet to be ignited. Now, though the third stage has completed its action, it continues to coast along with the fourth stage and the spacecraft. रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर अपनी It will नजर do so इसमें for the बनाए next रखते हैं 200 और उन्होंने seconds, घोषणा की during है which time there is PS3 को पृथक कर 129 दिया गया kilometers है gain in the तथा altitude. यान अपने सुनिश्चित पथ पर बढ़ता हुआ। The coast phase exists while the rocket is 1000 to 2370 kilometers PS4 downrange from coasting the launch phase में port. है। Vehicle performance normal. यह फेज करीब Port Blair 304.6 and Brunei सेकंड तक चलेगा। stations उसके tracking पश्चात presently. PS4 Vehicle इंजन को performance इग्नाइट किया normal. जाएगा। यान के सभी तंत्र सामान्य Plus काम 11 करते minutes. हुए अपने उद्दिष्ट दिशा को
पूरी तरह अनुसरण करता हुआ चतुर्थ चरण PS4 व अंतिम चरण है, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसका प्रज्वलन काल 132.6 सेकंड का होगा और यह कुल 14.66 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न कर उपग्रह को उनकी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा। Vehicle performance normal. इन उपग्रहों में सर्वप्रथम DSEO उपग्रह को अंतक्षेपित किया जाएगा। पश्चात क्रमशः DLA, न्यूसार तथा स्कूप 1 को अंतक्षेपित किया जाएगा। इस दौरान +9 minutes. हमारे ग्राउंड स्टेशंस जैसे शारपोर्ट, ब्लेयर, ब्रूने बाय For this mission, ग्राउंड the स्टेशंस में से PS4 will function वर्तमान as में PSLV ब्रूने orbital तथा ब्याक ग्राउंड स्टेशन experimental module or the यान के आंकड़े हम POEM तक पहुंचा रहे हैं। activity which performs in-orbit scientific experiments using the spent PS4 stage as an orbital platform. This is the first time that PS4 stage would orbit the Earth as a stabilized platform. PS3 स्टेज का प्रतिकीकरण। Attitude stabilization is achieved using a dedicated navigation guidance and control system. POEM derives the power from the solar panels mounted around the PS4 Vehicle tank performance normal. and a lithium-ion battery. Third It stage navigates using separated. 4 sun sensors, a magnetometer, gyro and Navig. There is a confirmation from the range operations director that the payload third stage has been separated space startups Messrs. Digantara and Messrs. The fourth stage and spacecraft are following their intended trajectory very closely. +13 minutes. PS4 is yet to be ignited. रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर अपनी नजर इसमें बनाए रखते हैं और उन्होंने घोषणा की है PS3 को प्रथम प्रमोशन से 800 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। यान अपने सुनिश्चित पथ पर बढ़ता हुआ, यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ PS4 कोस्टिंग फेज में है। यह फेज करीब 304.6 सेकंड्स तक चलेगा। PSLV को यूएस विश्वसनीय यान नहीं कहा जाता। PSLV अब तक 54 उड़ानें कर चुका है, उसमें 3 विकासशील उड़ानें थी तथा 51 वाणिज्यिक मिशन रहे हैं। इनमें से कुल 53 उड़ानें पूर्णतः सफल रही हैं। इस तरह PSLV की विश्वसनीयता संख्या 97.3% चरण है। PS4 व अंतिम चरण है और इस कारण से ही जो कि इसरो का पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन काल 132.6 सेकंड का होगा। 4 संरूपणों का उपयोग इसरो में किया जाता है। 14.6 अलग-अलग निर्धार तथा कक्षा के अनुसार उनका चयन किया जाता है। उनकी उद्दिष्ट कक्षा में PSLV-C संरूपण में समायोजित यह यान करीब 523 kg के निर्धारों को 570 किलोमीटर की दीर्घवृत्ताकार उपग्रहों में सर्वप्रथम DSEO उपग्रह को अंतक्षेपित किया जाएगा। अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे। पश्चात क्रमशः का DLA, न्यूसार तथा स्कूप 1 को अंतक्षेपित किया जाएगा। For this mission, the PS4 will function as PSLV orbital experimental module or the POEM activity, which performs in-orbit scientific experiments using the spent PS4 stage as an orbital platform. The fourth stage has been ignited and this is the first time that PS4 stage would orbit the Earth as a stabilized platform. Attitude stabilization is achieved using a dedicated parameters for the injection of satellites are achieved. POEM derives the power from the solar panels mounted around the PS4 tank. We are 15 minutes and 30 seconds from the launch. The altitude is 500 navigates using 53 kilometers, a magnetometer, gyro and Navig. POEM carries 6 payloads, including 2 from Indian space startups, Messrs. Digantara and Messrs. PSLV-C53 का सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ सर्वप्रथम DSEO की कक्षा प्राप्त की जाएगी, जो कि 570.5 किलोमीटर की है तथा इसे 7.07 किलोमीटर प्रति सेकंड की
सापेक्ष वेग से अंतक्षेपित किया जाएगा। अब हम प्रमोशन से 800 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। Back and Brunei stations are still tracking. Vehicle performance normal. PSLV को यूं ही भारत का विश्वसनीय यान नहीं कहा जाता। PSLV अब तक 54 उड़ानें कर चुका है। उसमें 3 विकासशील उड़ानें थी तथा 51 वाणिज्यिक मिशन रहे हैं। Prime satellite DSEO is a 365 kg Singaporean satellite. It carries an electro-optic multispectral payload with good imaging capability that will provide full color images for land classification and serving humanitarian assistance and disaster relief. किया जाता है। अलग अलग निर्धार तथा कक्षा के अनुसार इनका चयन किया जाता है। वर्तमान में PSLV-C संरूपण में समायोजित यह यान करीब 523 kg के निर्धारों को 570 किलोमीटर की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित करने जा रहा है। Is realigning itself to the correct attitude for the satellite separation. PS4 का प्रज्वलन। अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही क्षणों में DSEO उपग्रह, न्यूसार उपग्रह, स्क्रूप 1 उपग्रह जो कि सिंगापुर के हैं, उन्हें अंतक्षेपित किया जाएगा। +15 मिनट्स। अभी आप ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से यह कैमरा व्यू देख पा रहे हैं। Developing intended thrust. मुख्य उपग्रह DSEO को अंतक्षेपित कर दिया गया है उनके उद्देश्य कक्षा में। Parameters for the injection of satellites are achieved. Movement here in Mission Control Center as the prime satellite DSEO has been injected into its intended orbit. 30 seconds from the launch. The altitude is onboard camera visuals 53 kilometers. Next is the dual launch adapter separation, following which NEOSAR, Singapore's first small commercial satellite carrying a SAR payload, will separate. चतुर्थ चरण PSLV-C53 का सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ सर्वप्रथम DSEO की कक्षा प्राप्त की जाएगी जो कि 570.5 किलोमीटर की है तथा इसे 7.07 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष वेग से अंतक्षेपित किया जाएगा। अभी कुछ ही क्षणों में हम साक्षी बनेंगे न्यूसार तथा स्कूप 1 उपग्रह के अंतक्षेपण के। Four stage performance normal. NEOSAR satellite separated. Back and Brunei stations are still tracking. Scoop 1 satellite separated. PSLV-C53 DSEO mission accomplished. Handing over to mission director. PSLV-C53 has successfully injected DSEO primary satellites. Speaking about the satellites taking right in this mission, the prime satellite DSEO is a 365 kg Singaporean satellite having deployed the DSEO NEOSAR multispectral payload with good imaging capability. PSLV-C53 has accomplished its mission successfully. Hearty congratulations to the satellite customers. Another feather in the cap of and serving humanitarian assistance and disaster relief. To stay healthy and happy. Stay tuned for the address by Secretary DOS and Chairman ISRO. जी हाँ, हर्ष का पल यहाँ सभी तीनों उपग्रह उनके उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित कर दिए गए हैं और इसके साथ ही PSLV-C53 DSEO मिशन सफलतापूर्ण हासिल कर ली गई। Attitude for the satellite separation. अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही क्षणों में इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। न्यूसार उपग्रह, ग्रुप 1 उपग्रह जो कि सिंगापुर के हैं, उन्हें अंतक्षेपित किया जाएगा। The customer satellites of NSIL, अभी आप ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से यह कैमरा व्यू देख पा रहे हैं। DSEO satellite separated 570 km with a 10-degree inclination. मुख्य उपग्रह DSEO को अंतक्षेपित कर दिया गया है उनके उद्देश्य कक्षा में।
mission in Indeed, this, a jubilant this month, moment June here itself. in Mission Control Center The as the first being prime the satellite GSAT-24 DSEO launch. has Currently been the injected satellite into is its in orbit, intended orbit. drifting to its intended location. You've been watching with the this onboard today's camera mission, visuals. All these 3 satellites are placed in the right orbit. Next And is I the dual hope that the launch further activities for adapter satellites will be separation, taken up and the mission following will be which complete NeoSAR, success for our Singapore's customers. first And I small wish commercial all the very satellite best to carrying a NSIL SAR for payload, major missions to take up will in the separate. coming days using PSLV. And PSLV is waiting for that to happen. Many more missions are on the way for the customers all across the globe to come and get successfully placed in orbit. So let me wish once again all the very best to PSLV team for this wonderful accomplishment, proving the high reliability and availability of PSLV for the global customers. I also want to tell that after the primary mission, the PSLV Scoop is now 1 going to उपग्रह के write some अंतःक्षेपण के poems in orbit. The PSLV orbital experimental module is going to be functional after this, taking over the control of the 4-stage satellite separated to another computer which will take on from that. And the PSLV Scoop 4 1 stage will be satellite separated. a stage which is powered. PSLV-C53 DSEO mission accomplished, handing over to mission director. And also having certain experiments hosted by some of the very young startups enabled by InSpace. DSEO primary satellite and 2 other satellites into the desired orbit. For experiments on PSLV-C53 DSEO mission is fully accomplished. Details about its functioning. Having deployed the DSEO NeoSAR and Scoop 1 satellites, the PSLV-C53 has accomplished its mission successfully. Hearty congratulations to the satellite customers, another feather in the cap of ISRO. And as we take leave from you, do continue to stay healthy and happy. Stay tuned for the address by Secretary DOS and Chairman ISRO. जी हाँ, हर्ष का पल यहाँ सभी तीनों उपग्रह उनके उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपित कर दिए गए हैं और इसके साथ ही PSLV C53 DSEO मिशन सफलतापूर्ण हासिल कर ली गई। At different locations. A few seconds back, all of us have witnessed a wonderful launch of PSLV. PSLV C53, which is PSLV in its 55th launch. PSLV C53 has majestically taken off from the second launch. Good evening to all of you. And injected PSLV 3 satellites, C53 has precious satellites in their desired orbits. The customer satellites of NSIL was in a different DSEO, configuration this time. NeoSAR and Scoop 1 configuration, in the precise orbit coming back of to 570 SLP with kilometers with a 10-degree inclination. After a pretty long time. So we had so to congratulations to NSIL for accomplishing this yet another major to improve the productionization mission of PSLV in this, so that we this can month, June itself. Meeting the customer the first being the GSAT-24 launch. Currently the satellite is in orbit, drifting to its intended location. So with this today's mission, all these 3 satellites are placed in the right orbit. New Space India Limited, and I hope that the further activities for satellites will be taken up and the mission will be complete success for our customers. Selected us for and I wish all the very best to NSIL for customers to their major missions to take up in the coming days using PSLV. Our satellite team a wonderful and time PSLV is waiting for that to happen. Many more missions are on the way for the customers all across the globe to come and get with this successfully placed in orbit. Our mission would so have let been me wish completed once again all the very best to PSLV team for this wonderful accomplishment. But as proving the beloved high chairman reliability and we have availability of set our eyes PSLV really for the high global in this customer. particular mission. C53. I also want to tell that after the satellites, primary is mission, continuing its the mission. PSLV It is a 4 secondary stage mission as far as the PSLV is now is going concerned. to write some And the poems details have been in orbit. given by our The chairman PSLV orbital experimental PSLV, module, as you know, it is a four-stage vehicle. After first stage, second going stage, to be functional. third stage, after the this, functions are over. Those will be taking ejected. over the control of the 4 stage PS4 will take the satellite primary into mission its computer desired to orbit once the another orbit is computer which achieved. will take on PS4 from will that. eject the satellite into the And the orbit and it will PSLV 4 continue on stage its will be own. a From this point, we which is thought we will powered, take over generating power PSLV. on board We will and stabilized give some energy to attitude PS4 control and also try to do having certain some very experiments cost-effective hosted experiments by some of the which very can young satisfy startups the growing enabled by demands of InSpace. startups, of our student community, the as well as our scientific community, because they the have platform is hosted the available. payloads for experiments Left on to board itself, PSLV. it would have probably and taken its own experiments will course, it continue would have and we tumbled, it will would have get wobbled, or it details would have about its somersaulted, all those things. But given some energy
probably next we orbit. will be able to Until then, let me continue thank you the and active PS4 wish for all the some very more best to all time, of so that you the for platform is watching available, this all the launch of resources are PSLV available. You once keep some again payloads, from you keep some scientific Srihari, payloads so there, let me and wish definitely all the it very can best once serve again, a and secondary then purpose invite also. the mission That director is Sri where we Biju have set our for eyes his comments. this time. And definitely we are going to achieve it. We are targeting that. And this particular idea for this mission was conceptualized and implemented in almost a record time of something like 3 to 4 months. Good evening to all. 3 months time. And it is effectively, as I told, 2 missions rolled into one mission. Effectively 2 missions rolled into one mission. Centers, huge effort has gone in from all centers. In fact, for this particular mission, all centers of ISRO have contributed, and the dedication and the a few seconds extremely hard work put in by all wonderful members of Team ISRO is yielding results. I salute all of you for the wonderful contribution which you have given. I also thank profusely review forums, different review forums, as well as our second launch pad, administrative as well as auxiliary systems, injected services for supporting 3 satellites throughout the entire campaign as well as realization of this vehicle. I also thank my own project team being led by Sri Srikanth, as well as configuration vehicle director and associate vehicle director who always are on their toes, and we are coming back to SLP with this variant into the vehicle. Variant of also thank all our industry partners for time. Different areas of the country changes and also in vehicle systems we had to introduce some other changes to ease the or to improve the before winding up. I would like to acknowledge the sincere contribution as well as the growing demands of support being given by all our family members, our parents, our implemented, our kids, our spouses, everyone. Because without this, definitely a mission of this dimension will not be possible. I salute them also for facilitating us to keep on contributing to ISRO, so that always having repost the faith or the flag of ISRO and PSLV, the pride of our country, and having selected us for once again thank each and every one of you, particularly our seniors, customers, mentors, as well as members of very senior professors of our MRR forum who continues to team guide us even in space, personally calling us and giving very surpassing the design very precious pieces of advice as well as guidance. Usually ensure that PSLV success saga continues. Probably my words once again thank each and every one of you for